Starting with exercise 3.6, question number 2, sub question 3. The given question is, Ruhi travels 300 km to her home, partly by bus and partly by train. If she travels 60 km by train and remaining by bus, she takes 4 hours to reach. And if she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer than the earlier. We need to find the speed of the train and the speed of the bus. What we need to find? We need to find the speed of the train and speed of the bus. So let the speed of the train and the speed of the bus be u km per hour and v km per hour. क्या बोला मैंने? Let the speed of the train be u km per hour and the speed of the bus be v km per hour. क्योंकि वही तो फाइंड आउट करना है. फाइंड द स्पीड बोला है. जो फाइंड आउट करना होता है वो हमें एज्यूम करना होता है. सही बोला? ओके now I will show you some condition. हमें डिस्टेंस लेते हैं. Let's say the distance between point A and point B is 300 km. Point A is where Ruhi is standing and point B is Ruhi's home. ठीक है? ये कितना है डिस्टेंस? 300 किलोमीटर का. अब हम बहुत जगह ऐसे जाते हैं कि हम कुछ देर ट्रेन से जाते हैं, कुछ देर बस से जाते हैं, कुछ देर फ्लाइट से जाते हैं. सेम यहाँ भी हैपन हुआ है. सेम चीज यहाँ भी हुई है. इसने क्या किया है? कुछ देर ट्रेन से ट्रैवल किया है और कुछ देर बस से ट्रैवल किया है और टोटल टाइम कितना लिया है इसने? 4 आवर्स. समझ में आया आपको? कुछ देर में नीचे लिखता हूं. टाइम इन द ट्रेन प्लस टाइम इन द बस इज इक्वल्स टू 4 आवर्स. यही तो टोटल टाइम है. मुझे नहीं पता कि कितना टाइम यहां लिया और कितना टाइम है, मुझे नहीं पता. पर मुझे क्या पता है? मुझे एक चीज पता है कि इसने ट्रेन में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया है. कितना? 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर क्या है भाई? डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर. एंड रिमेनिंग शी ट्रैवल इन द बस. रिमेनिंग मतलब अरे यार 300 minus 60 is nothing but 240. तो रिमेनिंग कितना हो गया भाई? 240 किलोमीटर इसने डिस्टेंस बस में ट्रैवल किया. समझ में आया आपको? अच्छा. अब फर्स्ट कंडीशन में दिया क्या हुआ है? सर फर्स्ट कंडीशन में ये दिया हुआ है कि इतना इसने ट्रेन में ट्रैवल किया, इतना इसने बस में ट्रैवल किया और टोटल टाइम 4 घंटा हो गया. मतलब हमें यार टाइम से डील करना है. कुछ टाइम से डील. क्यों? टाइम बता, लास्ट में टाइम बता. टोटल टाइम 4 है, 4 आवर है. पर मुझे नहीं पता कि ट्रेन में कितना लगा और मुझे नहीं पता कि बस में कितना लगा. पर हाँ, मैंने एक चीज अज्यूम की थी अभी पहले. क्या अज्यूम की थी? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी u किलोमीटर पर आवर. इसका स्पीड मैंने क्या बोला? u किलोमीटर पर आवर. एंड लेट द स्पीड ऑफ द बस बी v किलोमीटर पर आवर. ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं? टाइम ट्रैवल इन ट्रेन, time she spent in the train and time she spent in the bus is equals to 4. अच्छा, इधर मैं सोच रहा हूँ यार शायद ये है फॉर्मूला. ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए. टाइम इन द बस एंड टाइम इन द ट्रेन. चलो टाइम इन द बस, टाइम इन द ट्रेन पर डिस्टेंस. यहाँ डिस्टेंस है, ये स्पीड नीचे आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में बॉर्डर का डिवीजन. ओके, नाउ टाइम इन द ट्रेन. ओके, टाइम इन द ट्रेन. पर डिस्टेंस क्या है इसका? 60 किलोमीटर. स्पीड क्या है? u किलोमीटर पर आवर. सो टाइम इन द ट्रेन यू गॉट 60 अपॉन u. तो यहां मैं लिखता हूं 60 अपॉन u. नाउ टाइम इन द बस, अब करता हूं मैं बस का टाइम. अब टाइम इन द बस is distance traveled by the bus is nothing but 240 kilometer or speed of the bus is nothing but v kilometer per hour. तो time in the bus क्या हो गया? plus 240 upon v is equals to 4. So this is my time in the bus, that is distance upon speed and distance upon speed. Time in the train and time in the bus. As time in the train is distance upon speed. Distance traveled by the train is 60 km and the speed of the train was u km per hour. Time in the bus is distance upon speed. Distance traveled by the bus is 240 km and speed of the bus was v km per hour. Hence time in the train plus time in the bus
is the time required to reach Ruhi to her home. समझ में आया आपको? फंडा समझ में आया क्या मैंने किया? तो I got my equation 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ. I got 60 upon u plus 240 upon v is equals to 4, marking this as 1. Okay. अब मैं इसको रब करूँगा फिर से. अब दूसरी चीज फिर से. अब दूसरा कंडीशन में क्या है? अगर रूही, ये पॉइंट बी है रूही का घर और रूही वहां स्टॉप पे खड़ी है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है फिर से 300 किलोमीटर का है. इस बार कंडीशन चेंज किया गया है. क्या किया गया? इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, कितना ट्रैवल किया उसने ट्रेन से? 100 किलोमीटर. कितना ट्रैवल किया ट्रेन से? 100 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन. तो बचा हुआ डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया? उसने बस से ट्रैवल किया. तो बस से जो ट्रैवल किया वो कैसे आएगा? 300 minus 100 is nothing but 200 kilometer traveled is a distance traveled by the bus. ठीक है. अब फिर से ये टाइम बता रहा है क्या किया. अगर उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया है और रिमेनिंग she has traveled by the bus, तो जो टाइम लगा है ना वो 10 मिनट ज्यादा लगा है पहले से. पहले से 10 मिनट ज्यादा, मतलब पहले कितना लगा था? 4 घंटा. अब कितना लगा है? 4 घंटा 10 मिनट. चलो मैं यहां लिखता हूं. That is time in the train plus time in the bus, दोनों मिला के इसको 4 hours 10 minutes लगे. 10 minutes. ओके. क्या है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि ये आर है. पहले भी मैंने आर में लिया तो मुझे इसको भी आर में लेना पड़ेगा. मतलब ये मुझे मिनट को ना आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. What is minute and hour? What is 1 hour is equal to how many minutes? It's 60 minutes. समझ में आया? 1 hour मैं बताता हूँ. 1 hour is 60 minutes. बहुत लोगों को डाउट होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये 60 को हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें. तो मेरे को एक चीज पता है. सीबीडी, मुंबई में एक जगह है कॉल्ड सीबीडी बेलापुर. मतलब कोई चीज अगर छोटा है, स्मॉलर इन यूनिट है, उसको आपको बड़ा करना है. छोटे से बड़ा यू हैव टू डिवाइड. छोटे से बड़ा डिवाइड. मतलब अभी ये क्या मिनट है ना, मिनट छोटा यूनिट है. आपको क्या करना है? छोटे से बड़ा करना है. मिनट टू आर करना है. आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड. छोटे से बड़ा क्या करना है? डिवाइड. तो हम करेंगे 4r प्लस 10 upon 60 और किसको डिवाइड करेंगे? उसके यूनिट को. दैट इज 1 hour is equal to 60 मिनट. छोटे से बड़ा डिवाइड. समझ में आया आपको? तो मैंने डिवाइड किया, कट से कट और आई गॉट 1 upon 6. 4 प्लस 1 upon 6 क्या हो गया? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है. इसको इससे, इसको इससे, इसको एक दूसरे से, तो मुझे क्या मिलेगा? 6 4 24 प्लस 1 upon 1 into 6 is 6. That is nothing but 25 upon 6. इतना टाइम लगा भाई मुझे 25 upon 6 hours मुझे लगे in the train and in the bus. Time taken in the train and time taken in the bus. मैं फिर से इसको अच्छे से लिखता हूँ. ये मैं पूरा वाइप करता हूँ और यहाँ मैं इसकी जगह पे मैं 25 upon 6 लिखता हूँ. अब ध्यान दो. Time taken in the train and time taken in the bus is nothing but 25 upon 6 hours. ठीक है? अब मुझे बताओ, ये टाइम इन ट्रेन और टाइम इन द बस दोनों को ऐड करके इतना है. हाँ, दोनों को ऐड करके. तो अकेला अकेला कितना होगा? मैंने आपको पहले ही बोला था, let the speed of the train be u किलोमीटर पर आवर. इसका स्पीड मैंने क्या बोला था? It's u किलोमीटर पर आवर. And the speed of the bus be v किलोमीटर पर आवर. ओके, ठीक है, चलो ठीक. अब मुझे चाहिए इसका टाइम और मुझे चाहिए इसका टाइम, क्योंकि टाइम इन द ट्रेन उसको कितना लगा, टाइम इन द बस उसको कितना लगा. चलो निकालते हैं. दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. आपको क्या चाहिए सर? टाइम चाहिए, तो टाइम को अकेला रखो. यहां स्पीड मल्टीप्लिकेशन में बॉर्डर क्रॉस का डिवीजन यू विल गेट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और नाउ मेरे को क्या डिस्टेंस क्या है? टाइम इन द ट्रेन मिनट का. तो डिस्टेंस in the train travel the second condition कितना? 100 किलोमीटर. और speed as usual u किलोमीटर पर आ रहा है. ओके, ठीक है. that is time in the train is 100 upon u plus time in the bus. मतलब distance travel
is 200 kilometers upon speed of the bus was v किलोमीटर पर आवर, तो मुझे क्या मिलेगा 200 upon v is equals to 25 upon 6. So time in the train was distance traveled by the train upon speed of the train, that is distance traveled by the train is 100 kilometer and speed of the train was u kilometer per hour. Time in the bus was distance traveled by the bus upon speed of the bus. Distance traveled by the bus was 200 kilometer and speed of the bus was v kilometer per hour. So time 1 plus time 2 is equals to time 25 upon 6. Now I got my second equation as 100 upon u plus 200 upon v is equals to 25 upon 6. Okay. Yes. Marking this as equation number 2. अब मैं पूरा वाइप करता हूँ. Now I will solve this equation number 1 and equation number 2. I got. Okay. समझ में आया? फंड आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है. मेन फंड है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम मुझे टोटल दिया हुआ था, तो मैंने एक बस में कितना टाइम लगा और ट्रेन में कितना टाइम लगा, दोनों को ऐड करके टोटल टाइम दिया हुआ था, तो मैंने वो फंडा इसमें अप्लाई किया है. ओके नाउ solving this equation number 1 and equation number 2, can I write this equation number 1 as 60 into 1 upon u plus 240 into 1 upon v is equals to 4, and this equation number 2 as 100 into 1 upon u plus 200 into 1 upon v is equals to 25 upon 6. हाँ लिख सकता हूँ भाई. मुझे क्या दिख रहा है? 1 upon u सेम है, 1 upon v सेम है, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा by another two variable, that is putting 1 upon u is equals to p, or let's say x, your wish, p बोलता हूँ मैं, and 1 upon v is equals to q. Okay, so I will get यहाँ मैं लिखता हूँ 60 into p plus 240 into q is equals to 4. That can be written as 60p plus 240q is equals to 4. Marking this as equation number 3. Okay, now this can be written as 100 into p plus 200 into q is equals to 25 upon 6. Can be written as 100p plus 200q is equals to 25 upon 6. Marking this as equation number 4. But before marking this as equation number 4, मैं इसको solve करना चाहूँगा. Solve करूँगा इसको mark करने से पहले. यहाँ 6 division में border cross करके multiplication, so I will get 6 into 100 is nothing but 600p, and 6 into 2 is nothing but 1200, that is 1200q is equals to 25. Now marking this as equation number 4. So I got my equation number 3 and equation number 4, my new equation. Now I will solve these two equations by elimination method. अब elimination method solve करने के लिए मुझे term same चाहिए, तो चेक करो क्या मेरा first term same है, नहीं same है, क्या मेरा second term same है, नहीं same है, तो मुझे उसको multiply करके कोई number से multiply करके same करना पड़ेगा, right? तो मैं क्या करूँगा, multiply equation 3, अगर 600 मुझे सेम करना है, तो मुझे इसको बस into 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और मैं फैमिली में एक बंदे का पैसा बढ़ा तो सबका पैसा बढ़ेगा, राइट? तो मुझे इसको भी into 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी into 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So my new equation will be 600p plus 2400q is equals to 40. Marking this as equation number 5. Now subtracting equation 5 from equation 4 और equation 4 from equation 5. ठीक है, अब मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ. यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, subtracting equation 4 from 5. तो मुझे equation 5 क्या है? equation 5 का लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखूंगा, it's 600p plus 2400q माइनस, घर खोलना ना बोले ब्रैकेट खोलो. इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा 600p plus 1200q is equals to इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड 40 माइनस इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड 25.
ऑन सॉल्विंग मैं ब्रैकेट घर खोलूंगा, जैसे मैं घर खोलूंगा तो ये प्लस था अंदर माइनस हो जाएगा और ये अंदर प्लस था माइनस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खोलते हैं तो मैं क्या करूंगा, कट कट ना 24q minus 1200q is nothing but 1200q is equals to 40 minus 25 is nothing but 15. So I got the value of q as 15 upon 1200, ठीक है। now तो मुझे क्या मिलेगा, 1200 15 ones and 15 8s 120, तो ये 80 हो गया, तो मुझे मिलेगा 1 upon 80, q is equals to 1 upon 80, ठीक है। now I will substitute this value of q in equation number, किस में करना चाहिए आप बताओ, किस में करें, इक्वेशन नंबर 3 में करें या इक्वेशन नंबर 4 में करें, मैं तो बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 5 में करें। चलो now substituting this value of q in equation number 5, मैं यहाँ लिखता हूँ substituting q is equals to 180 1 upon 80 in equation 5, तो rewrite equation 5, 600p plus 2400q is equals to 40, q की वैल्यू मैं यहाँ डालता हूँ 2400 into 1 upon 80 is equals to 40 and here plus 600. Okay, now अब ये 0 0 got cancel, 8 ones are 8 threes are, तो 30 हो गया, राइट। ओके, अब ध्यान देना, तो मुझे मिला 600p plus 30 is equals to 40, ठीक है, ठीक है। ये कैंसिल, कट से कट, 3 are 30 I got, ये 30 यहाँ प्लस में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा माइनस, I will get 600p is equals to 10, p is equals to 10 upon 600, cut से cut, I got 1 upon 60. So I got the value of q as 1 upon 80 and I got the value of p as 1 upon 60. Now I will resubstitute the value of q and the value of p. The value of p is nothing but, यहाँ मैं लिखूंगा resubstituting p is equals to 1 upon u and q is equals to 1 upon v. Now I will write the value of p as 1 upon 60 first and q as 1 upon 80. Now I will substitute the value of p and q, that is 1 upon u is equals to 1 upon 60 and 1 upon v is equals to 1 upon 80. Now I will reciprocate it, I will get u is equals to 60 and v is equals to 80, that is kilometer per hour and kilometer per hour. And u was nothing, आपको याद होगा, u was the speed of the train, that is speed of the train was 60 km per hour and speed of the bus was 80 km per hour. समझ में आया? Okay, the speed of the train was 60 km per hour and speed of the bus was 80 km per hour. आप क्वेश्चन में भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड थी, ट्रेन की जो स्पीड थी वो कम थी। क्यों मैं बताता हूँ, देखो जब ना ऋतु 60 किलोमीटर ट्रैवल बाय रूही जब रूही ने 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया तब 4 घंटे लगे, और जब 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया तब उसको 4 घंटे से भी ज्यादा लगे, 4 घंटा 10 मिनट लगा। समझ में आ रहा है? इसी से आपको पता लगाना चाहिए कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो कम थी और जो बस की स्पीड थी वो ज्यादा थी। So the speed of the train was 60 km per hour and speed of the train, speed of the bus was 80 km per hour. And this is the solution for the given problem. Now let me show you the representation in exams. This is the perfect solution for the problem. That is per hour is the speed of the train and 80 km per hour is the speed of the bus. First you will let the speed of the train be u km per hour and the speed of the bus be v km per hour, that is 60 upon u plus 240 upon v is equals to 4. Marking this as equation number 1 according to first given condition, and 100 upon u plus 200 upon v is equals to 25 upon 6. Marking this as equation number 2. Okay, now putting the value as 1 upon u is equals to p and 1 upon v is equals to q. In this equation we obtain
60p plus 240q is equals to 4, marking this as equation number 3 after solving it, and 100p plus 200q is equals to 25.6. Now 6 यहाँ division multiplication will get 600p plus 1200q is equals to 25, marking this as equation number 4. Now multiply equation 3 by 10, we obtain 600p plus 2400q is equals to 40, marking this equation number 5. Now subtracting equation number 4 and 5. Okay, we get 1200q is equals to 15 and q is equal to 15 upon 1200 and q is equal to 1 upon 80. Now we will substitute this value q is equals to in equation number 3. We get 60p plus 3 is equals to 4, that is 60p is equals to 1 and that is p is equal to 1 upon 60. After resubstituting the value of p and q, we got p is equals to 1 upon u is equals to 1 upon 60 and q is equals to 1 upon v is equals to 1 upon 80. Now we reciprocate the value of 1 upon u is equals to 1 upon 60 and 1 upon v is equals to 1 upon 80. We got v, u is equals to 60 km per hour and we got v is equals to 80 km per hour. If you like this video, do share and subscribe. Thank you.